फैट लॉस तो मेरा गोल था भी नहीं. लेट्स सी. गरुड़ पुराण में अलग शिक्षा अलग टॉर्चर लिखा हुआ है. I'm going to finally break my fast. Hey, what's up guys, Praful here and जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, I'm going on a 72-hour fast. Basically, I wanted to just give you the conceptual idea of what exactly I'm gunning for, because fasting से ना बहुत ज़्यादा benefits है and it's also hard, right? तो जिससे बहुत ज़्यादा benefits मिलता है, obviously वो इतना आसान तो होता नहीं है and it's a little hard on your psyche, तो it will demand you to be disciplined, it will demand your willpower and all that, but multiple benefits है fasting का. Right now I'm into 16th hour of my fast and I'm going for 72 hours and I'll be taking only water in this 72-hour period. So first let's talk about like why am I going for this fasting. If you look at even our ancient culture and दुनिया के सारे रिलीजन्स ले लो, कोई भी रिलीजन ले लो, ठीक है, हिंदुइज्म ले लो, जैनिज्म ले लो, बुद्धिज्म ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो या इस्लाम ले लो, हर एक रिलीजन में देयर विल बी एटलीस्ट वन फेस्टिवल where the people are forced to fast, right? तो हर एक रिलीजन में फास्टिंग का इंपॉर्टेंस समझा गया है एंड फास्टिंग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एंड it's just in the last 50-60 years that most people are kind of brainwashed by these big pharma industries and food companies that breakfast is the most important meal of the day and you have to eat small meals every 3 hours or something. That's only to drive up their revenue. It's the biggest bullshit ever, because as animals, ठीक है, हम लोग जब केव में रहते थे as paleolithic beings, we didn't have access to the food 24/7. अब तो हम लोग हमेशा फूड का एक्सेस रहता है. दैट्स व्हाई लाइक वी थिंक ऑफ इट एज ओ कभी भी हम लोग बिंज कर सकते हैं, कभी भी हम लोग इंडल्ज कर सकते हैं, बट इट वाज नॉट द केस, राइट? हम लोगों को अगर एक बार हंट करते तो देन वी माइट हैव टू वेट फॉर अनदर 2 or 3 days. So that's how human beings are built. But that narrative doesn't help all these food companies and these pharma companies. They kept telling us this bullshit that you have to eat every 2 hours, every 3 hours or something like that. हजारों साल पुराने रिलीजन्स में भी ये लिखा गया है कि फास्टिंग इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड हमारा जो मॉडर्न साइंस जो आया है इट्स जस्ट अबाउट 100-150 इयर्स. द मॉडर्न साइंस इज कैचिंग अप टू ऑल दिस एंड नाउ दे आर coming up with all these research and all that which says that fasting is extremely beneficial. So I'll post a description of a doctor. उनका नाम है शायद जमुना लाल or something. Like he has this 1 hour, 1 hour 20 minute long video where he explains in detail about this entire biomechanics of this fasting. And वो देखो, biochemistry, biomechanics पूरा explain करता है वो. And I'm just going to touch each of these benefits on a superficial levels. The first thing, what I'm mostly gunning for is autophagy. What is autophagy? Because of constant eating and because of our lifestyle habits and because of bad food habits, हमारा जो cells के बीच ना, there are certain kachra. Let me put it that way. There are certain kachra and also there are cells which are not fully functional and which are not completely healthy, but they are still inside our system. It's like कुछ dead product आपके warehouse में पड़ा है and it is kind of using up a lot of real estate in your body. So when you start fasting for 72 hours, 48 hours or whatever for fasting up karoge, the first thing that happens is your body starts eating up all these dead cells, all these bad cells. And similarly, another most important thing about this fasting is it will clean up all the carcinogenic cells. Carcinogenic cells मतलब कैंसर सेल्स. जो यूजुअली कैंसर सेल्स जो होते हैं ना, दे थ्राइव ऑन एक्सेस ग्लूकोज. तो उनको एनर्जी चाहिए रहने के लिए. बट वंस यू स्टॉप फीडिंग योरसेल्फ फॉर 72 hours, the cells which are carcinogenic in nature, they are dead. तो वो चला जाता है. It increases longevity, it reduces aging, it increases antioxidant properties of your body, and of course fat loss, weight loss तो है, but I'm not gunning for fat loss or weight loss because मैं already like 8% या 9% body fat पे हूँ. That is not the main goal I'm looking for. And the next thing is it regulates your blood pressure, it regulates your blood sugar, it regulates your insulin level. अगर आपका insulin resistance है तो वो कम हो जाएगा. You become much more sensitive to insulin, and it leads to the formation of new brain cells. नए brain cells भी form होता है because your brain starts consuming ketones instead of glucose. तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो शूट अप हो जाता है एंड यू विल फंक्शन मच बेटर. आपका अलर्टनेस, अटेंटिवनेस वो बढ़ जाता है. एंड after that,
one of the most important things is the surge in human growth hormone. So let's say like if you have been hitting the gym, you have been working out for a long time, but you're not able to put on like a decent muscle mass on your body. Why? It's because of, it may be of two reasons. One is your workouts are not that intense. If your workouts are intense and still you're not able to put on muscle mass, it's because your testosterone is low और your body's growth hormone is low. Like आपका body growth hormone अच्छे से produce नहीं कर पा रहा है. And when you fast, there is a surge of human growth hormone of more than 2000%. And it's all proven. तो research है, आप जाके देख सकते हैं. And even your body's testosterone levels start going up. And your body starts producing stem cells. And I'm gunning for mostly autophagy and HGH surge. तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ. But apart from that, whatever the other benefits, of course, वो मेरा advantage है, वो bonus है बस. Yeah, so it's been 16 hours into my fasting. And ऐसे नहीं कि मतलब मैं फास्ट करता रहूंगा तो मैं हमेशा मैं सोता रहूंगा. Nothing like that. I'm carrying out my normal day-to-day activities. Even now I have an expiry trade, Sensex की expiry trade भी चल रही है. And I'm recording Sensex expiry trade का जो explanation है वो भी मैं record करके upload करने वाला हूँ. It's not like I'm completely going in a hibernation mode और मैं completely मतलब सो रहा हूँ, ऐसा नहीं है. It is said that the first 18 hours are okay. You don't feel anything. As of now, it's around 16-17 hours and I'm not feeling much of a difference. But 24 to 48 hours का जो time period है, that is the hardest because वहाँ पे आपको cravings शुरू हो जाता है and you start a little dizzy, you start experiencing some amount of headaches and all that. तो जब वैसे feel होता है मैं update देता रहूँगा. And yeah, as traders it's very important कि we take care of our health also, because हम लोग मतलब भाई पूरे दिन पड़े रहते हैं यार स्क्रीन के सामने. तो it's very important to get some physical activity, to have some ice baths, to go on fasts once in a while, to go for like meditation retreats or something like that, because एक overall एक माहौल बना रहे, सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है लाइफ में. So that's the point I'm trying to make this video, because मैं कुछ दूसरा हेल्थ का या फिटनेस का कुछ अलग चैनल बना के मैं ये सब कर सकता था, बट नो, आई वांट दिस वीडियो टू रीच ऑल ऑफ यू गाइस. तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो नॉट जस्ट योर ट्रेडर फ्रेंड्स, जस्ट सेंड इट टू एनीवन लाइक हु हैज अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हु इज अ बेसिकली मॉडर्न मैन. क्योंकि हम लोगों का जो डिसीजेस जो आ रहा है ना, जो भी हम लोगों को जो डिसीजेस आ रहा है, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ अबंडेंस. इट्स नेवर बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी. जो डायबिटीज है, जो ब्लड प्रेशर है, जो ओबेसिटी है, जो डिप्रेशन है, इट्स everything is because of excess supply. At 16 hours I'm feeling fresh, I'm feeling energetic. कुछ energy loss नहीं हो रहा है, कुछ dizziness नहीं है. Almost 24 hours into the fast, and yeah, I can feel the hunger, I can feel my stomach going grrr. So energy levels थोड़ा नीचे जाते हुए दिख रहा है, and I can feel that the glycogen stores are getting out and they're getting exhausted. But yes, as they say, 24 से लेके 48 hours के बीच का जो time period है, that is the hardest, where you feel a lot of hunger pangs and you start getting like hungry plus angry. And this is the place, this is the phase where a lot of people quit, and I'm trying to get myself distracted as much as possible so that I don't quit at this point of time, because this is the hardest part, right? Like अगर मैं 24 से लेके 48 hours तक अगर मैं survive कर लिया, तो probably 48 to 72 hours is a little bit easier, as they say, because at that point my ketone bodies start kicking in and body starts producing ketones, and that will start supplying the energy that I require. In the fasted state, I completed almost 10,000 steps today, and then I took my dog for a walk, and I traded an entire day of expiry, and then 2 घंटा chess खेला, which was pretty much a bad idea, because chess नहीं खेलना था 2 घंटे, because that drained a lot of energy, because बहुत ज़्यादा mental power होता है, and your brain is one of the organs like which takes away a lot of your energy, lot of your fuel. And that I did, which I shouldn't have done ideally, but देखेंगे. As of now I feel super light, and light in not a good way, a little weak, a little tired, thoda lag raha hai, you can say from my eyes as well. But yeah, we are trying to push our bodies, and we are doing this for a greater good. तो देखेंगे, जब तक पुश होता है तब तक पुश करना है. It's been almost 36 hours now. मैंने स्टार्ट किया था थर्सडे 9 o'clock या 10 o'clock के बीच में फास्ट स्टार्ट किया था, एंड नाउ टुडे इज Saturday somewhere around 11 o'clock in the morning. It's been 36 hours,
एंड या मतलब कल रात को ना 18 to 24 hours the phase was a little difficult because I was getting a lot of hunger pangs and I was getting hangry and I was feeling a little weak. But now the energy levels are quite good. I think अभी बॉडी में मतलब वो जो कीटोन प्रोडक्शन है that has started and I'm feeling all okay. In fact, I went for a walk. कल भी मतलब मैंने I completed 10,000 steps. I took dog for a walk and I even went for a small run and थोड़ा एक light exercise भी किया and I'm feeling pretty good. But I'm not sure like if I'm able to work out or not. But workout मैं करने वाला हूँ on the final day. मतलब कल शाम को मैं वर्कआउट करने वाला हूँ, that too just 2 hours before the fast. मतलब एक तगड़ा वर्कआउट करूंगा on a fasted, on a 72-hour fasted state. Then I'm going to break the fast. So that's the plan. यहाँ पे अपना फूफ है. This is फूफ द फूफ. फूफी ये देखो. See, this is our foof. I think मसल लॉस तो नहीं लग रहा एंड आई डोंट थिंक इतना 1 या 2 या 3 दिन में मसल लॉस होने वाला है. थोड़ा बहुत वेट रिडक्शन हुआ रहेगा एंड फैट रिडक्शन तो पता नहीं. फैट का तो मैं फैट लॉस तो मेरा गोल था भी नहीं. लेट्स सी. तो ठीक ही लग रहा. नथिंग. सो देखेंगे क्या होता है. तो अनदर 36 आवर्स देखेंगे. यहाँ पे अपना अपना फूफ डफूफ. जो लोग जानबूझकर मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम डीएम पे स्ट्रीट फूड के रील्स और शॉर्ट्स भेज रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर के फ़ोटो भेज रहे हैं जानबूझकर, सच बता रहा हूँ भाई, ऐसे पापों के लिए ना गरुड़ पुराण में अलग शिक्षा, अलग टॉर्चर लिखा हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी बहुत हार्ड है और तुम लोग और हार्ड कर रहे हो. ठीक है, मज़ा आ रहा है. 12 बजे बज गया है संडे को. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 63 hours of fast. Another 9 hours बचा हुआ है. I'm gonna break my fast tonight at around 9 o'clock, 10 o'clock के बीच में I'm gonna break my fast. And yeah, तो it's been like a slightly bumpy ride, but nothing too drastic changes in the energy levels. अगर आप देख सकते हैं, अगर मेरी वॉइस से भी आप पहचान सकते हैं, तो the energy levels haven't dropped. But yeah, the face, you can see it in the face कि मतलब थोड़ा और like sunken हो गया है कि the eyes have gone deep into their sockets a little bit. Of course, like अगर calories नहीं होता है for almost 3 days तो obviously थोड़ा बहुत weakness आती है. But energy levels पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. एंड अगर मसल मास भी देखोगे तो द मसल मास इज ऑल्सो काइंड ऑफ इट्स ओके. आई मीन इतना भी मतलब डिफरेंस तो मुझे नहीं दिख रहा. एंड व्हेन इट कम्स टू द फैट लेवल्स, so this is what it looks like कि just because I was already like sub 8 or 9% body fat, तो मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि suddenly weight loss होना या कुछ तो. But one of the major things that I noticed is definitely the sleep quality has gone down, and it's pretty hard for me to fall asleep for more than 6 hours when I'm on a fasted state, because 6 घंटे के बाद ना वो जो ghrelin hormone है, the hormone which regulates your hunger cycle, so that kicks in and that suddenly wakes me up from the sleep. तो ऑब्वियसली थोड़ा स्लीप का क्वालिटी वो थोड़ा स्लीप मतलब सोने में थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है. एंड देन अनदर थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज फेस थोड़ा ड्राई हो रहा है, राइट. एंड दैट्स आल्सो मेनली बिकॉज मतलब एसेंशियल फैट्स जो नहीं मिल रहा है बॉडी को अंदर से, स्किन को जो अंदर से वो जो नरिशमेंट होती है वो नहीं मिल रहा है, प्रोटीन्स नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मतलब ड्राइनेस फील आ रही है. बट आई होप इट्स टेम्पररी एंड इतना ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की चीज़ नहीं है. And yesterday, to make it hard, I went for a movie, especially in a mall जहाँ पे पॉपकॉर्न का स्मेल आ रहा है, जहाँ पे मतलब नाचोस का स्मेल आ रहा है, जहाँ पे स्नैक्स का स्मेल आ रहा है. तो it's quite challenging to resist that temptation, but yeah, it's what it is. तो apart from that, of course, like occasional hunger pangs आते रहते हैं कि suddenly you start feeling like there is nothing in your stomach, एक vacuum सा एक feeling आ जाती है. And it gets a little hard to resist that feeling. And घर पे खाना वाना बनता रहता है नीचे, and whenever you go into the kitchen to drink water, you get all that food and your olfactory system becomes so sensitive. दूर दूर तक कहीं पे भी खाना बन रहा है तो उसका मतलब स्मेल आ जाता है. And yeah, it becomes your alertness, your attentiveness goes up, and naturally because अभी आपका body survival state में है. Now that the body is kind of metaphorically it's hunting for food, so you have to be extremely alert
एंड वही अलर्टनेस आ रहा है मेरे में भी, एंड आई कैन सी दैट. बट मूड एंड ऑल, नथिंग, लाइक नो चेंज इन द मूड. मतलब लोग बोलते हैं कि whenever you're fasting, like your mood will be extremely low and आप एकदम low हो जाते हैं. I never felt, and this is my first time, right? It's not like I've been fasting for a long time, and genuinely मुझे ऐसे कुछ generally मतलब मूड होने दो या एनर्जी लेवल्स होने दो, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है. एंड ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज जब भी आप बिना काम के कुछ ऐसे बैठे रहते तो ऑब्वियसली द माइंड automatically starts to think about the food, about your stomach, about what you're feeling and all that. So वो थोड़ा distraction चल रहा है, देखेंगे. This is what I'm going to be breaking my fast with. A lot of dry fruits, cashew nuts, almonds, walnuts, and a little bit of raisins. I'm going to keep carbohydrates as minimum as possible, and most of my refeed is from fats and proteins. And इसके साथ में मेरा वे प्रोटीन शेक भी पीने वाला हूँ. And उसके बाद after 1 hour of breaking the fast with this, I'm going to introduce some carbohydrates slowly. थोड़ा बहुत जैक फ्रूट, थोड़ा बहुत राइस एंड थोड़ा बहुत केक कुछ है. आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट.